Hello students, today we will do exercise 4th C. So in this exercise, you will do questions based on multiplication and division. So see question number first, A part. Heading is you have to multiply and number is 17,392 multiplied with 68. We have to multiply these two numbers, and in previous classes you had already studied how to multiply the two numbers. So in order to multiply, first of all you have to multiply this last number with all these numbers. 8 we have to multiply, 8 with 2 we will do first, 8 to the 16, 1 we have to write on the top, then 8 9 is 72, 72 plus 1 will be 73, 3 we will write here and 7 we will write on the top. Now 8 3 is 24, 24 plus 7 when we will do, answer will be 31, 1 we have to write here and 3 we have to write on the top. Now 8 7 we have to multiply, 56 plus 3 59, 59, 9 we have to write here and 5 we have to write on the top. Now 8 1 is 8. After that you have to add this 5, answer will be 30. Now at the end, at the last number, under this we have to put cross sign. Under the last digit we have to put cross sign. Now we have to multiply 6 with all these numbers. So what we will do? 6 we have to multiply now. 6 to the 12, 2 here and 1 on the top. Now 6 9 54 plus 1 55, 5 we have to write here and 5 we have to write on the top. 6 3 is 18, 18 plus 5 23, 3 we have to write here and 2 we have to write on the top. Now 6 7 we have to do, 6 7 is 42, 42 plus 2 44, 4 we have to write here and 4 we have to write on the top. 6 1 is 6, 6 plus 4 will be 10, so 1 here and 0 under this 1. Now we have to add these number. इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. 6 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, 9 plus 3 12, 1 here, 4 plus 3 7 plus 1 8, 1 1. So this is the final answer of first part. So like this you have to do all the remaining parts of question number first. Now see question number third P part. You have to multiply 2431 with 246. So first of all what you have to do? This last number you have to multiply with all the numbers. 6 1 is 6, 6 3 is 18, 1 we will write on the top, 6 4 is 24 and 1 25. So 5 I will write here and 2 I will write on the top. Now 6 2 is 12, 12 plus 2 will be 40. Now under the last number we have to put cross sign. Now I have to multiply with 4. अब किससे करेंगे multiply? 4 से multiply करेंगे. So we will erase these carries whatever we have written here. Now this 4 we have to multiply with every number. First of all this 4 we have to multiply with last. 4 1 is 4, 4 3 is 12, so 2 we will write here and 1 we will write on the top. 4 4 is 16 plus 1 will be 17, so 7 we will write here and 1 we will write on the top. 4 2 is 8, that 8 plus 1 will become 9. Now 2 cross you have to put. Under the last two numbers you have to put cross. First earlier we had used 1 cross, now we will use 2 cross sign. Now this 2 is remaining, so this 2 we have to multiply with every number. 2 1 is 2, 2 3 is 6, 2 4 is 8, 2 2 is 4. Now we will add these numbers. 6 8 plus 4 will become 12, so 2 we have to write here and 1 we will write on the top of these numbers. Now we will add these numbers. 5 plus 2 7 plus 2 9 plus 1 10, so 0 1 on the top. 7 plus 4 11 plus 1 12, 12 plus 6 will become 18, 8
1 on the top. Now 9 plus 1 10 plus 1 11, 11 plus 8 will be 19. So 9 we will write here and 1 we will write here. 4 plus 1 will become 5. So this is the answer of third question B part. So like this you have to do question number 1, 2, 3 and 4. All the questions are same. You have to do multiplication only as we are doing here. Now come to question number 5th, C part. Question is, you have to multiply 357 with 13,000. So in this question you will observe at last 3 zeros are there. So ऐसे क्वेश्चन जिनमें लास्ट में ज़ीरोज़ होते हैं उनके लिए इजी वे जो है वो क्या है आपको ध्यान रखना है. सबसे पहले आप 357 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 13 से. इजी वे आई एम टेलिंग यू. आप इसमें वो मेथड भी लगा सकते हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में करा था. द इजी वे टू डू सच क्वेश्चन इज जिनके लास्ट में ज़ीरो होता है आपको क्या करना है, ज़ीरो हम बाद में ले लेंगे, लीव द ज़ीरो. 357 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 13 से करेंगे. सो ऑन मल्टीप्लाइंग दिस लास्ट नंबर विद दीज नंबर वी विल गेट 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, 15 plus 2 will be 17, 1 3 3 जा 9 plus 1 10. Now at last we have to put cross sign. 1 7 ja 7, 1 5 ja 5, 1 3 ja 3. Now we will add these number. 1 7 plus 7 will be 14, 1 5 plus 1 will become 6 and 3 plus 1 will become 4. So on multiplying 357 with 13 we are getting 4 6 4 1. So what you have to do here, you have to write 4 6 4 1. Multiplication of 357 and 13 is 4 6 4 1 and these last 3 0 we will write at last. तीनों बची हुई जीरो जो लास्ट में थी वो आप कहाँ लगा देंगे? लास्ट में लगा देंगे एंड यू विल गेट द आंसर. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. दिस इज द इजी वे टू डू दिस क्वेश्चन. तो 357 की 13 से करेंगे, आंसर विल बी 4 6 4 1. दैट आंसर यू हैव टू राइट हेयर. और लास्ट 3 0 जो हमने छोड़ी थी वो अब हम लास्ट में लगा देंगे. सो आंसर इज 46,41,000. सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5th C part. Now come to question number 6th B part. We have to divide 28,280. आपको डिवाइड करना है 28,280 को 325 से. So here 3 digits are there and here if we will take 3 digit, अगर हम 3 digit लेते हैं तो ये छोटा नंबर है इससे, तो आपको 3 नहीं लेनी है, आपको क्या लेनी है? 4 digits लेनी है. Now 325 टेबल वी हैव टू रीड और आंसर कितना लाना है? 2828 से छोटा लाना है आपको. इफ़ वी विल मल्टीप्लाई 325 बाय 8, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 plus 4 20, 8 3 जा 24 plus 2 26. We will get 2600. If we will multiply 325 by 9, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18, 18 plus 4 22, 9 3 जा 27, 27 plus 2 29. We will get 2,925. बट यहाँ तो 2,828 है एंड वी आर गेटिंग 2,900. तो दिस इज ग्रेटर. तो हम कौन सा लेंगे? 8 times 325. 8 जा कितना आया है? 2600 आया है. नाउ इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट. 8 minus 0 will be 8, 2 minus 0 will be 2, 8 minus 6 will be 2. Now what you have to do, this 0 we have to bring down. ये है 2,280 और हमारे पास क्या है यहाँ? 2,600. अभी और छोटा लेना है. 325 8 जा लिया था, अब आप करके देखेंगे 325 7 जा 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14, 14 plus 3 17, 1 7 3 जा 21 and 1 22, 2275. This number is okay. 325 7 ja 2275. On subtracting these two number we will get 5 0 0 0.
तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर आ गया है, रिमाइंडर इज 5 एंड क्वोशिएंट इज, क्वोशिएंट क्या होता है? क्वोशिएंट होता है जो आपका डिवाइड करके आंसर आता है, तो इनको डिवाइड करा था, आंसर क्या आया? 87. तो क्वोशिएंट इज 87. So like this you have to do all the parts of question number 6. Now come to question number 11. From question number 7th to 10th all are same as we had done in question number 6. 11th is also same. I am explaining you question number 11. A part. Always it is A part. You have to divide 7038421 with 639. So this is the 3-digit number. Here also we will take 3 digit. So 639 2 ja if we will do, answer will be 1278. But यहाँ पे 703 है. So 1278 we will not take. We will take 639 1 ja 639. Now we will subtract these number. इनको माइनस करेंगे. On subtracting we will get 64. This 8 we have to bring down. तो ये बन जाएगा 648. 639 1 ja 639. On subtracting these numbers we will get 900. From top we have to bring 4. When we will bring 4 this will become 94. ये 94 बन जाएगा. बट 94 इज नॉट कमिंग इन ए टेबल ऑफ 639. ये तो स्मॉलर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक और नंबर लेना पड़ेगा नीचे. तो सेम प्लेस पर 4 भी लिया नीचे और 2 भी लिया नीचे. जब भी आप दो नंबर एक साथ नीचे लाएं तो आपको आंसर में 0 लगाना है, याद रखें. सो दीज 2 नंबर्स टुगेदर वी हैव टू ब्रिंग डाउन, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? 0. 639 1 ja 639. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इट. इनको माइनस करेंगे. 12 minus 9 3 0. 9 minus 6 will be 3. Now this one we have to bring down. तो ये है 3031. This is the table of 639. 3031 आ रहा है. So this is 3195. ये तो बड़ा हो जाएगा इससे, तो हम ये नहीं लेंगे, हम ये लेंगे 4 जा. कितना लेंगे 4 जा? 2556. और इनको माइनस करेंगे. 11 minus 6 will be 5. 3 की जगह रह जाएगा 2. 12 minus 5 करेंगे तो 12 minus 5 होगा 7. और यहाँ 30 की जगह बन जाएगा 29. 29 minus 25 we will do, answer will be 4. So this is the remainder. यहाँ लिख देंगे आप, ये रिमाइंडर है और ये क्वेश्चन है. So like this you have to do question number 11. So now your homework is, all the questions of division and multiplication are same. You have to finish this exercise by yourself. In case of any doubt, आपको अगर कोई problem होगी, then you can comment in the comment box. I will clear your doubt.